हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और आज की व्लॉग में मैं आपको क्लिफ की वॉक कराने आई हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सी है पूरे में। और आज हम जो वॉक करेंगे उसमें हम ओल्ड टाइम के कैरेक्टर से मिलेंगे जो उस एरिया में पहले रहते थे 100 ऑफ ईयर्स अगो। और वो डिटेल में हमको बताएंगे पूरे इस एरिया के बारे में कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, पहले यहाँ क्या होता था और लोग कैसे रहते थे। सो मिलते हैं फिर। चलिए दिखाती हूँ आपको पूरा टूर अपने साथ। सो जी लिफ्ट बनाई हुई है, ये अभी बंद पड़ी है क्योंकि इसका जो रास्ता है आपको देख सकते हैं नीचे कितनी हाइट है, नीचे जाने के लिए है ये। बट अभी इसको बंद किया हुआ है। आई थिंक ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। कितनी इंटरेस्टिंग है। और ये पूरा आगे रोड जा रहा है वेस्ट क्लिफ। आज जो आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो 17 एंड 1800 सेंचुरी से होंगे। एंड फिर हम देखते हैं उनको, मिलते हैं डिफरेंट कैरेक्टर से। और देखिए, चलिए आगे दिखाती हूँ आपको जिस कैरेक्टर से मैं मिलूँगी। और हमारी वॉक स्टार्ट हो चुकी है विद अ ग्रुप। सो चलिए मिलते हैं, फिर देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब हम कॉस्ट्यूम कैरेक्टर से मिलते हैं और इंग्लैंड की हिस्ट्री जानते हैं कि 17 और 1800 में कैसे लोग क्या कपड़े पहनते थे, क्या होता था, क्या करते थे। सो जो ये डिटेल वो बताते हैं मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। साथ में हमें ब्यूटीफुल व्यूज़ भी मिलते हैं जो अराउंड एरियाज़ में होते हैं। सो चलिए मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। My name's Scylla and I'm one of the guides on the costume walks. We have 4 walks, the town walk, West Cliff, East Cliff and the harbour. And we tell you about the highlights of the history of each of the areas. And as we go around the route, you will meet costume characters from the 17th and 18th centuries. I cannot waste my precious time with idlers and rascals. When I think of those villains and humbugs who have been building in the classical or pagan styles, I am horrified beyond belief. I believe there are only 2 things in life really worth living for: pointed Christian architecture and the sea. I stand or fall by my true principles, and there was not a true principle broken when I built the Church of St. Augustine. What are those principles? Firstly, that there should be no features about a building which are not necessary, whether for convenience, construction or propriety. And second, that all ornament should consist of the enrichment of the essential construction of the building. My beloved Church of St. Augustine, what a joy to raise it to God's glory with all my own money and no dreadful committees. I'll walk out on them if necessary. आपने देखा, मैंने आपको एक कैरेक्टर से मिलवाया और अब हम आगे जा रहे हैं अपना टूर कंप्लीट करने के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है, कितना गॉथिक आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो देख के। ये डोर है चर्च का। It was finished in 1852 and he died very soon after. सो मैंने अभी आपको दिखाया चर्च और वो बिल्डिंग जहाँ वो लिव करते थे कैरेक्टर। और अभी हम आगे जा रहे हैं और अपना टूर कंटिन्यू करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, हमने वेस्ट क्लिफ की वॉक स्टार्ट कर दी है। पीछे ये आगे सी है और ये क्लिफ सी साइड पर है। और अभी हम आगे जाएंगे और फिर अगले कॉस्ट्यूम कैरेक्टर से मिलेंगे। आप देख रहे हैं मैं सी साइड पे जो क्लिफ है वेस्ट क्लिफ, उसके ऊपर वॉक कर रही हूँ। और आज जो हमारे गाइड है वो हमें हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, इस क्लिफ की क्या हिस्ट्री रही है, यहाँ जो आसपास हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बताएंगे, कैरेक्टर से मिलवाएंगे और पूरा टूर कराएंगे, हमें पूरा अच्छे से समझाएंगे। सो जितने कैरेक्टर से मैं मिलती रहूँगी मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। और अभी आगे एक और कैरेक्टर दिखेंगे हमें, वेट कर रहे हैं हमारा। Good afternoon. I met Augustus here at West Cliff ये House. जिनसे हम My पहले मिले थे, ये uncle, उनकी Mr. वाइफ है Henry Benson's और अपनी resident स्टोरी and सुना रही है। friend of Augustus's. We were actually engaged to be married on the 25th of January, 1848. But my father was the Anglican rector of the church at Upper Hardress, just outside Canterbury, and I fear for religious reasons he opposed our marriage. As you can imagine, these were the most distressing times for me. इनके फादर इनकी मैरिज के खिलाफ so थे। sensitive. जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं पोर्ट के और नियरेस्ट आते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं हम बिल्कुल पोर्ट के साइड में चल रहे हैं। ये पूरा वेस्ट क्लिफ है
और पूरी हम हिस्ट्री जानेंगे इस एरिया की। अच्छा लग रहा है चलते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पोर्ट के कितना पास आ गए हैं और ये पूरी हमने वॉक यहाँ पे कर ली है। ये सामने जो रोड आ रही है इसको पूरा हम क्रॉस करके आ गए हैं। अब हम लैंड पे जा रहे हैं आगे और जो भी बिल्डिंग्स होंगी और कैरेक्टर्स होंगे उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। ये जो सामने यहाँ पे एक पब देख रहे हैं, ये 1860 का बना हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बिल्डिंग है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया आप देख सकते हैं। नीचे जा रहा है अंडरग्राउंड। टेनिस कोर्ट एंड गार्डन बना हुआ है और आप देख सकते हैं कुछ लोग प्ले भी कर रहे हैं। हम इसके अराउंड वॉक करेंगे। ये भी काफ़ी पुराना है। सो ये वन मोर कैरेक्टर, वाओ, शी इज़ लुकिंग रियली ओल्ड। Mr. Vincent van Gogh, have you? Manners, I'm Bessie Bowers and I'm working for Mr. Stokes and he's just sent me off a little errand. We want to tell you some things about Mr. Van Gogh. हमें पिक्चर दिखा रहे हैं ओल्ड टाइम की, इसके बारे में बताएंगे अब, पर ये ऑडिबल नहीं है इसलिए मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे वो बहुत क्यूट लग रही थी। एक्चुअली थोड़ी ओल्ड थी इसलिए उनकी साउंड कैप्चर नहीं हो पाई, थोड़ी ऑडिबल कम थी, उनकी साउंड प्रॉपरली नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने उनको ना शूट कर ही लिया क्योंकि इतनी क्यूटली कर रही थी ना एक्टिंग ओल्ड टाइम्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनको देख के। अपने एज के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत स्टेमिना था। आई थिंक वो काफ़ी एजड लग रही थी मुझे, बट एनीवेज। सो ये जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनका नाम है मिसेस टाउनले। I can see that you're admiring this handsome square. Now I can tell you something you may be surprised to know. I designed these buildings and all the land on which they stand belong to our family. Yes indeed, in addition to being a fashionable couple, my husband and I entertained, among others, Princess Victoria and her mother, the Duchess of Kent. James and Points, my eldest and youngest sons, died. Points, but 20, was killed fighting the French, and my husband died in 1817. My ways altered. Whist gave way to Bible readings, and 2 of my remaining sons became immersed in religious matters. So हमने ये पूरा एरिया जो था टेनिस कोर्ट और अराउंड एरिया पूरा चेकआउट कर लिया है और अब हम आगे जा रहे हैं। By somebody called Anthony Paget, and as you can see it's finished in bronze. He gave 6 of these to places where Van Gogh had been. So there's actually 2 others in London, one in Hackney and one in Isleworth, where he went from here to teach. There's one in France, I'm not quite sure where the others are, but they were also finished in iron and silver as well. और मैं आपको ये पास से दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छा मास्टरपीस बना हुआ है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस एरिया की हिस्ट्री जान के और यहाँ के कैरेक्टर से मिलके, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि क्या हुआ था और वो लाइव डेमो देते हैं आपको, पूरा करके दिखाते हैं नेक्ट कि उनकी लाइफ कैसी थी, सैड थी, हैप्पी थी, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए, क्या था उनकी लाइफ में, कब वो बॉर्न हुए थे, कब डाई हुए थे, तो पूरा बताते हैं उसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में। और इंटरेस्टिंगली हमें भी पता चलता है पहले ज़माने में कैरेक्टर्स कपड़े कैसे पहनते थे और कैसी उनकी लाइफ होती थी। हमें लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ होती होगी, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल होता था उस टाइम पे भी लाइफ में। और क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा अटैक्स वगैरह हुए हैं यहाँ फ्रांस के और डिफरेंट, पहले रोमन्स आए थे, फिर एंग्लो सेक्सन्स आए, फिर अलग अलग चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। काफ़ी इनकी भी काफ़ी अच्छी और बड़ी हिस्ट्री है इंग्लैंड की, तो ये सब जान के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी नॉलेज बढ़ती है। ये सामने बिल्डिंग भी कितनी ओल्ड लग रही है, पूरी स्ट्रीट ही ओल्ड बनी हुई है जो हमें ये विज़िट करा रहे हैं। Just one more thing about Addington Street. It was named after Henry Addington, Viscount Sidmouth, who was a Prime Minister from 1801 to 1803. So we're going to go down to Liverpool Lawn now. So इस स्ट्रीट में हम एंटर कर रहे हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है अभी। Okay, so if you'd like to come in. सो मेरे गाइड ने मुझे बताया कि ये जो लॉन है, यहाँ पर लॉन के नीचे जो पूरा लॉन है इसके नीचे टनल है और हमें अभी उसकी एंट्री नहीं दिखेगी, जब ग्रास ड्राई हो जाती है हमें जब उसकी एंट्री दिखती है। इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी इसको लॉन बनाया हुआ है पूरा
ताकि यूज़ हो जाए। और वर्ल्ड वॉर 2 में वो टनल यूज़ हुई थी। My name is Selina Welby. That name might sound familiar to you, and that's because of my nephew, Augustus Northmore Welby Pugin. He is the son of my sister. Such a talented child, why only in his teens he designed furniture for the Windsor Castle. But alas, he has known great sorrow. His wife Annie died giving birth to their daughter. Also they named her Annie, and he came and stayed with me, and I hoped that I was of some help to him. Alas, his mother died as well shortly after. But he married again to Louise, and he had 5 more children. And sadly Louise died as well, but he married again to Jane and had 2 more children. So I now have got 8 great nieces and nephews. इसकी पूरी लुक दिखा देती हूँ मैं इस ओल्ड बिल्डिंग की आपको। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कासल, वॉल्मा कासल। तो हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर से मिल लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें चेकआउट कर ली हैं, और अब हम आगे जा रहे हैं वॉक का आगे कंप्लीट करने, और हम फिर से सी फ्रंट पे आने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। That time on the East Cliff, there was no road. So you can see Madeira Road snaking up there. That wasn't built until the early 1900s, so there's no way up there until much later on. सो ये पूरा हार्बर है जिसकी हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया, और वहाँ ये बोट है। This tidal board is a very great help to the ship's masters. It helps them to determine the level of water between the piers so that they may safely enter. सो अभी बस लास्ट कैरेक्टर से मिलने जा रहे हैं हम, बाकी सारे तो हमने देख लिए हैं, और फिर उसके बाद बस क्लिफ वॉक करके हम वापस जाएंगे जहाँ से आए थे। और ये रास्ते में किसी ने ना प्लांट सेल लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्राइस भी लिखे हुए हैं कि मनी यहाँ लेटर बॉक्स में छोड़ जाएं जिसको भी लेने हैं प्लांट्स। सो ये 1800 में बना है, नेल्सन क्रिसेंट। Was after the Napoleonic Wars, and the officers and things would live here. और एक और कैरेक्टर जिनसे हम मिलने वाले हैं। Thank you. Would you like to gather around this gentleman? I'm feeling rather awkward because I've got trouble with the gout and my digestion. But this is because I'm so fond of eating the wrong foods. Oysters, pate, sweet lobster, dry champagne. But, you know, I'll never forget when I was dining with Charles Dickens in Boulogne. We stayed together. Make sure, mostly important, that your children are legally named because they are the sufferers. And also, don't overwork or you will suffer from nervous debility. And you'll have to take laudanum. Also, I say come to Ramsgate whenever you can. In this lovely sunny weather, enjoy the sea air. Thank you very much. I do appreciate your... और ये पूरा एरिया कितना ब्यूटीफुल है, दूर सी है, सामने लिफ्ट है, इधर एक कैफ़े बना हुआ है, और ये जो चर्च मैंने आपको दिखाया था, सेंट ऑगस्टिन चर्च, पूरा लुक देखिए। सो जैसा कि आज आपने देखा, मैंने आपको इंग्लैंड के वेस्ट क्लिफ की वॉक कराई, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया, कॉस्ट्यूम कैरेक्टर से मिलवाया। मुझे तो बहुत मज़ा आया जानकर।
अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करूँगी। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शर्माज लाइफस्टाइल इन यूके। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो जो मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए मेरे चैनल पर शर्माज लाइफस्टाइल इन यूके और मेरी सारी वीडियोस को देखिए और मैं आपको ऐसे एंटरटेन करती रहूँगी। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय।